Now properties of AP. Samantar Sri Tribune first. Difference between two conjugated terms always same. Always same. That is दो कर्मागत पदों का अंतर सदैव नियत रहता है. फर्स्ट. सेकंड, by adding or subtracting any constant number in each term obtains series also in AP. किसी अचर संख्या से संख्या को प्रत्येक पद में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी होती है. by multiplying or dividing each term by constant number. Obtains series also in AP. अचर संख्या से गुणा या भाग करने पर प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी ही होती है. किसी समांतर श्रेणी के लिए पाएगी if number of term is even, take 2n. If then
term n by 2 plus 1. And if odd, to n plus 1, middle term n plus 1. If there are three terms, take a minus d, a plus d. For fourth term, if there are four terms, then a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus d. If there are five terms, then a minus 2d, a minus d, a plus d, a minus 2d, a minus d, a plus d, a plus 2d. Okay? 7 from beginning from starting and ending. इतनी प्रॉपर्टी अगर आपको लर्न है तो फिर आपको प्रॉब्लम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमने हिंदी में नहीं लिखा है, ये आप समझ जाएंगे। मैंने इसको हिंदी में नहीं लिखा, बता देता हूँ। अगर आपको सामान्य तीन क्रमांक पद लेने हैं तो ए माइनस डी, ए प्लस डी लीजिए। अगर आपको चार पद लेने हैं तो ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी प्लस डी प्लस थ्री डी लीजिए। अगर आपको पांच पद लेने हैं तो ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी प्लस 2d लीजिए और आपका न्यूमेरिकल 7 हो जाएगा। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एपी। नाउ आई विल सॉल्व सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इट। First problem is A, B, C, R and AB, then prove that B plus C, C plus A plus B, R and AB. Okay, now solution. Let
बी प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, आर एन ए। सपोज करिए उठाओ फिर, देन वी कैन से बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, आल्सो इन ए पी by property, by adding or subtracting any number, the obtained series is also in AP. Okay, so we are going to subtract minus a plus b plus c in each term. Okay, we find that अगर हम each term से a plus b plus c माइनस कर देंगे तो bc कट जाएगा। देखो bc कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है माइनस a, ca कैंसिल हो रहा है माइनस b, ab कैंसिल हो रहा है माइनस c, also and ap multiplied by a b c, also and ap by multiplying each term by minus 1, which is given, अच्छे given, ये given है बेटा। therefore b plus c plus a plus b in AP if ABC in AP। second question बेटा, ABC in AP, then prove that, b plus c minus है, b plus c minus है, c plus a minus b, a plus b minus c, r and ap। okay, second question solution, b plus c minus a, here is b plus a ना होता तो a आ जाता, c plus a ना होता तो b आ जाता, और a plus b ना होता तो c आ जाता। तो आप चाहे इसको लेके चलो चाहे इसको लेके चलो, दोनों मेथड से आप कर सकते हो। मैं इसको लेके चला हूँ, देखो a b c r and a b imply that 2a minus 2b minus 2c r and ap, हमने माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। नाउ एडिंग माइनस 2a a प्लस b प्लस c माइनस 2b a प्लस b प्लस c माइनस 2c a प्लस b प्लस c also and ap by going to adding a plus b plus c। now here is b plus c positive, 2a minus a negative, c plus a positive, 2b minus b negative, and a plus b positive, 2c minus c negative, also and ap। so we can say with the help of this we can prove the third questions, all problem are can be done with the property of parallelogram। फर्स्ट प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं आप, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटम आर द सेम करके आप ये वैल्यू दिखा दो तब भी आप कर सकते हो और आपके आंसर सेम रहेंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आप वैसे भी कर सकते हो। देखो सेकंड मेथड, a2 minus a1 equal to a3 minus a2, here c plus a minus b minus b minus c plus a,
और a प्लस बी माइनस सी प्लस बी, here c cancel, 2a minus 2b, here b cancel, 2a minus 2c. Okay, now c plus a minus b minus c plus a, तो 2a minus 2b हो गया, a plus b minus c plus b, सॉरी प्लस b हो जाएगा, b नहीं कैंसिल होगा, क्या कैंसिल होगा बेटा, a कैंसिल हो जाएगा, 2b minus 2c माइनस 2 कॉमन ले लो, b माइनस है, माइनस 2 कॉमन ले लो, c माइनस है, that is b minus a equal to c minus b, implies that a b c and, तो आप सेकंड मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, बट यू कैन डू लाइक दिस आल्सो. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. It is a very easy, but you have to solve. Question is a upon, prove that a 1 by b plus 1 by c, b 1 upon c plus 1 upon a, c 1 by a plus 1 by b, r and if ये prove. Now solution. That here is more things. So first of all you consider let जो given है उसे consider कर लो. a 1 upon b plus 1 upon c, b 1 upon c plus 1 upon a, c 1 upon a plus 1 upon b, r and AP. Okay, thus a b plus c by bc, b a plus c by ca. We are going to take the LCM. Okay, c plus b take it back. b plus a by ab, r and AP. Okay, now AB CA by BC, BA BC by CA and BC CA by AB also and AP. Now we have it here. If we add plus 1, then AB BC CA. If we add plus 1, then AB BC CA. If we add 1 BC CA plus B, we observe that in the denominator all quantities are same. So now add 1 is each term. Okay, we have AB CA BC upon BC, AB BC CA upon CA, AB BC CA upon AB also and AP on dividing by on
डिवाइड करेंगे दे कैंसिल, तो नाउ 1 upon BC, 1 upon CA, 1 upon AB also and MB. Okay, now multiplied by ABC in each term. BC, ABC, CA, ABC, AB, AB, CA, EC, also and AP, implied that A, B, C, also and AP. Okay, which is given. Change. It is some term, okay? Not term, it is a complicated. You have need to consider, have to know about it. If you lose the numbers, you lose the confidence, you cannot able to solve that type of the problem. Because here we have need to consider that numbers that can be bring us in ABC. Okay? Here is BC, CAB जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, we found that कांस्टेंट नंबर रोटेट 1 ऐड कर दिया तो न्यूमरेटर के सारे कांस्टेंट नंबर हुए। अब मैं कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको ये एलिमिनेट हो जाएंगे और फिर ABC से आप मल्टीप्लाई के तो कुछ बच्चे कहते हैं कि हाउ कैन आई रिटर्न इट that we have to add here, we have to subtract here. How can do it? How can we think about it? It is the practice. Mathematics is the practice. Practice is important for it. Without the practice, without the self-study, may never come in your mind. I suggest all my dear students, please study and practice, daily practice. Okay? Now next questions. Under root B plus under root C, under root C plus under root A, under root A plus under root B, and AP. Okay, again let under root B plus under root C, under root C plus under root A, under root A plus under root B R and AP. By multiplying and dividing we are not able to solve it. Therefore, applying first condition. AP में तो common difference क्या होंगे? Same होंगे. Cardinal terms we apply formula A2 minus A1, A3 minus A2. Now take the LCM. Under root B plus under root C, under root C minus under root A, upon under root C plus under root A, under root B plus under root C, under root C plus under root A minus under root A minus under root B upon under root A plus under root B and under root C plus under root A. C से cancel, A cancel, C plus A cancel. Now under root B minus under root A, or that is under root B plus under root A. लिख सकते हो पॉजिटिव में चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। C माइनस बी
or that is c plus under root b. Okay, that is b under root b square minus under root a square under root c square minus under root b square. That is b square b minus a equal to c minus b. B here 2b c plus a implies that a b c are an a b. Okay friend, thank you. We try out more some problem based on it, and I also request if any problem related to the AP, you can be message me 9451038537. This is my WhatsApp number. Okay, and in call also at this number. I will try to solve your problem. Okay, if any problems according to AP, please send me. I will solve your problem with our knowledge as we know. Okay, I also request please study and you have a nice day, and your night is a very fantastic because the studies depend on your night base. According to us, the study is a comfortable time for the study is the 8 p.m. to 3 p.m., 3 a.m., 4 a.m. as you can be challenged. Okay, thank you.